Good morning, everyone. Welcome to Commodity Research Club. This is a live show on Commodity Weekly Outlook, covering all about bullion, energy, and base metal. So, before starting, let's break these sessions into two parts. The first part will be covering the fundamental factors. This will be where we are going to discuss the concepts and essentials, elements, data that's form the foundations of our topic. And moving on to the second part, we'll dive into technical analysis. I'm going to share my screen with you all and make it interactive. We are going to explore charts data and we are going to see the more practical side of the things better, right? So let's start the fundamental sides. So summary for last week gold prices is last week gold prices dropped despite ongoing economic and geopolitical factors that could have keep hold gold prices from falling further. So the key factors that influenced gold prices is like weaker US job data. The US has released its non-farm payroll data, which shows that only 1,14,000 new jobs were added in July, which was expected around 1,75,000. So this weaker job growth raised fears of problems in economic slowdowns and recessions. So, because of this, there is growing speculations that the US Federal Reserve might cut interest rate in September to stimulate the economy. So, the possibility could prevent gold prices from falling too much, as lower interest rates generally make gold more attractive. And second factor is geopolitical tensions in the Middle East. So tensions are rising in Middle East with the concern about the potential conflict involving in Iran and Israel. So this situation is leading some investors to buy safe havens, which could help and support the gold prices. Third, we could see the upcoming gold data. See, like investors are waiting for the US ISM service and PMI data, which will show how the service sectors of the economy is doing. If the data is better than expected, it could strengthen the US dollar and limit the potential increase in the gold prices. So conclusion from fundamental side is like while gold prices have edged lower, it has come to down. Factors like possibility of US interest rate cut down and geopolitical risk in the Middle East might limit some further decline. But the upcoming economic data, which also plays a key role in determining the future movement of the oil, gold prices, right? So second is crude oil prices. So the last week crude oil prices saw a slight increase, but gains were limited due to worries about slowing global economy, and there is increase, and this increase was driven by concern over possible supply disruptions due to rising tensions in the Middle East. So, what are the factors that going to influence crude oil is the economic slowdown concern. The very first thing is the economic slowdown concern. The oil prices had dropped to their lowest level in the last 8 months, right? No, after a series of weak economic reports from US, and these reports raise fear that the US economy, which is the world largest, might be heading to recessions. So while these weak economic signals that a speculation that the Federal Reserve might cut interest rate, so there are concerns that it might be too late to prevent an economic downturns, which could reduce the further future demand for oil. Second concern is the Middle East tension. So there is an heightened tension in the Middle East, particularly concern over the conflict involving between the Israel and Hamas has kept some trader worried about potential disruptions in the oil supplies from the region. So this has not in this but still this um, concern has not been enough to prevent the sharp decline in the prices, which is seen in the recent weeks. Third point is weak demand from China. And though the China, the world last oil importer, has also shown the weak economic data, signaling there is a fear of
this poor economic data from China has raised concern about the slowing demand for oil, adding to pressure in the oil prices. So conclusion from crude oil prices, like it is facing a mix pressure from from fear of economic slowdown in the US, and there is a weak demand from China, along with concern about potential supply disruptions due to Middle East tensions. So these factors has led to a slight increase in oil prices, but has not reversed the overall downtrend in the recent week. Okay, so we'll come to base metals. The key factor that has influenced base metal prices is global economic concerns like the US job growth slowed more than expected in July, and unemployment rate rose to 4.3%. This has sparked worries about the weakening labor market and the potentials for the recession, right? Additionally, weak manufacturing activity in China has added to global concern, leading to sell-off in the base metals. And the second point is interest rate expectation. The weak US job report, it's very weak US job reports has increased expectation that the Federal Reserve might cut interest rate more deeply starting in September. But if this happened, it could boost industrial activities and increase demand for metal. So in short, you can expect base metal prices, particularly copper, are experiencing delicate balance between buying opportunity from the recent drops and worries about global economic health. So while some investors are cautious and they are cautiously optimistic about base metal prices, but ongoing concern about the economy are capping the significant gains. So this was all about the economic factor which we have covered. Now I'm going to share my screen and we'll do some technical analysis on all this, right? So yeah, hope everyone can clearly see my screen. What we are expecting right now, we have seen here in a classic technical analysis, if you do, here we can see the triple top formation, right? One is this and this. So here we can see like price did not sustain above 74,000, not at all. One time, second time, third time. And this time was the time when it has given a sharp fall and has broken the support level which was around 71,000. So अगर अभी फिर से हम देख सकते हैं क्लासिकल अगर पैटर्न देखें हॉरिजॉन्टल वे और इसने जो 71,000 का ब्रेकडाउन किया है तो वो इतना नॉट इमीडिएट बेसिस वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये ऊपर जाएगा तो वी कैन सी कि ये एक और मूविंग एवरेजेस के भी नीचे सस्टेन कर रहा है एक नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है और ये जो डार्क ब्राउन लाइन है दैट इज 100 डेज मूविंग क्रॉसओवर है यहाँ से हमने देखा कि क्रूड ने सॉरी गोल्ड ने एक सपोर्ट लिया ये वाला लेवल बट स्टिल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये नीचे ऊपर सस्टेन कर सकता है ये लेवल्स एंड देयर इज अ चांस के 71,000 के आसपास से फिर से एक सेलिंग आएगी बिकॉज यहाँ से इसने टाइम प्राइस ने सपोर्ट किया था और उस सपोर्ट को तोड़ा है और अच्छे खासे वॉल्यूम्स में तोड़ा है सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि 71,000 के ऊपर मार्केट जाएगा so there will be a good opportunity anywhere if you wanted to incur a sell position but still there is a recommendation if there is a breakout above 71,000 we can expect for up to 73,000 and we can expect these three top level to see again but if suppose if it is not breaking above 71,000 again we can say 67,000 and this is the very strong support which is 66,981 which is 200 is moving average तो जब तक 71,000 के ऊपर नहीं आता एक साइडवेज टू डाउन साइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है एमसीएक्स गोल्ड के प्राइजेस में तो लेट्स सी सिल्वर का क्या है सिल्वर में हम देख सकते हैं सेम गोल्ड जैसा ही परफॉर्म किया है पर इसमें क्या हुआ है कि प्राइस ने यहाँ भी ऊपर सस्टेन नहीं किया है 96,000 का लेवल
और वहाँ से शार्प ब्रेकडाउन दिया है और अभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। सो जो 86 और 85,000 का लेवल है फिलहाल अभी एक अपसाइड अच्छा बड़ा गैप है और डाउन साइड ये 79,000 का एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। तो हमें हो सकता है साइडवेज टू डाउन साइड ही मोमेंटम देखने मिले। जिस हिसाब से अगर कुछ अच्छा आता है लाइक जैसे फंडामेंटल फैक्टर्स हमने डिस्कस किया तो हम इधर ये मोमेंटम पे वेट कर सकते हैं लाइक 85,000 के ऊपर जाए तो ये फर्दर ऊपर जा सकता है। अदरवाइज इसका बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस हो गया है 85,000 के आसपास। अगर प्राइस वहां पे सस्टेन नहीं करते हैं तो एक बार 79,000 इमीडिएट बेसिस पे हमें देखने मिल सकता है। राइट, क्रूड ऑयल में देखते हैं। So crude oil जैसे mix things है like it is now at very crucial support level। ये ट्रेंड लाइन है और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन देखे तो 6,000 के नीचे नहीं दिख रहा है। बट आप देख सकते हो कि प्राइसेस में फॉलिंग प्रेशर ज्यादा है, बड़े बड़े लाल लाल कैंडल्स हैं, देयर इज अ फॉलिंग प्रेशर। सो वी हैव टू वेट फॉर अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल which we have before entering or before making any long position we have to be very cautious कि अगर ये जो लेवल है यहाँ से अच्छी एक इसको कवर अप करते हुए कोई कैंडल आ जाती है तो एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट देख सकते हैं इसमें भी साइडवेज टू डाउन साइड मोमेंटम रह सकता है। अपसाइड आप देख सको कि 65,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और नीचे 6,500 का एक ऊपर रेसिस्टेंस है और ना डाउन साइड आप देख सकते हो कि 6100 से एक इसे अच्छा सपोर्ट है। तो जब तक कोई अच्छा लाइक सपोर्ट है शायद ही नहीं तोड़े और कुछ इसके लिए सपोर्टिव आ जाए फंडामेंटल फैक्टर कुछ भी यहाँ से ये रिवर्सल होने का चांस है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच इन क्रूड ऑयल। राइट, तो एक साइडवेज मोमेंटम हमें इस वीक देखने मिल सकता है। लेट्स कम टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक डेड जोन में ही है, उसमें कुछ मोमेंटम नहीं आ रहा है। अभी 160 एक आप बोल सकते हो कि ये हर सपोर्ट तोड़ तोड़ के एक मेजर सपोर्ट के पास पहुंच गया है जो आप देख सकते हो ये लेवल है 165 टू 160 का। अगर 160 के नीचे ये ज्यादा जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट मोर बेयरिशनेस और वैसे तो कोई रिवर्सल दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से अगर ये फिर से टर्न आउट होता है तो एक बार 185 तक जा सकता है अगर 160 का सपोर्ट लेता है। अगर 160 तोड़ दे तो काफी नीचे आने का चांस है कि 157 158 ये जो लेवल है 138 तक आ सकता है। सो बट स्टिल अभी 160 का इसको बहुत मेजर सपोर्ट है जैसे आप देख सकते हो। यहाँ से एक रिवर्सल होने का चांस है, स्टिल देर इज अ चांस बट देर इज नो रिवर्सल फॉर कंफर्मेशन। कॉपर में हम देख सकते हैं ये कॉपर में यहाँ से आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये 200 दिन की मूविंग एवरेज होती है, मतलब एक साल का मूविंग एवरेज। तो एक साल का मूविंग एवरेज कॉपर का है 784 का। वहां से इसने ब्यूटीफुली रिएक्ट किया और ऊपर आया है और अभी साइडवेज हो गया है। शायद कोई उसको मेजर ड्रिवन नहीं मिल रहा है कि वो पुश करे प्राइसेस को। तो यहाँ से अगर प्राइस पुश होते हैं तो 830 के ऊपर एक अच्छा रैली मिलेगा और अगर 830 के ऊपर नहीं सस्टेन करता है डाउन आएगा तो फिर से एक 780 तक आ जाएगा। सो यू कैन एक्सपेक्ट 780 तो और ऊपर 830 का ब्रेकआउट करना है फॉर दी गुड रिवर्सल फॉर अपसाइड टारगेट। राइट, तो ये जब तक 830 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है देयर विल बी नो मेजर rally in base metals, which is copper price, right? So this is all about technical factor in commodities market. So I would like everyone to, and that's all about the session. And thank you for joining us for this week's session of on commodities. We appreciate your participation and hope you found this information valuable. Stay tuned for more updates and insights in our upcoming sessions. Have a great week ahead. Thank you.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.